Hi all, my name is Rohan Chopra. Welcome to Edumont classes. Today we'll be talking about FAR. Specifically, we'll be talking about fair value measurement. Now, when it comes to fair value measurement, I specifically like this topic because it's one of those topics that will be used in your life. Instead of you reading it and then forgetting it in a couple of years. This is one of those topics that you will use in your daily practice. And fair value specifically is needed to be known as a concept to anybody who is intending to be working as a professional accountant anywhere. So it's common across different gaps as well. But today we'll be talking specifically from the US GAAP perspective, and I will be talking about number one, what is fair value? Number two, why do we need fair value? हमें क्यों चाहिए? क्या ज़रूरत है हमें fair value निकालने की? And then number three is going to be how do we calculate it? What are the steps for it? So you can see that there are 5 steps for FV measurement. It's already mentioned there, but I will be walking you through each of the 5 steps and I'll tell you what the process is. So first let's talk about what is fair value. Fair value है क्या? और आपने ये टर्म पहले सुना होगा, fair value of a product. This is the fair value. What do you mean by fair value? So fair value is the price that I would receive for a product or the price that I would have to pay if I transferred an obligation or a liability in an open market scenario, in an orderly arm's length transaction between two unbiased parties who are capable of entering into a contract. Long definition, right? Don't worry, let's simplify it. जो दाम मुझे अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में, दो नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में इन अ नॉट फोर्स्ड ट्रांजैक्शन मिलेगा, वो फेयर वैल्यू है. सो फेयर वैल्यू मुझे चाहिए क्यों? व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू? So in US GAAP specifically, there are assets which appear in my balance sheet that have to be at fair value. There is no choice. वो fair value पे ही नजर आएंगे. For example, if you've got held for trading assets, and this is something that we haven't taught you yet. It's not part of the chapter 1 course curriculum, which is where we currently are. We will get to this eventually, but like I said, there are assets. I've made investments held for trading, और ये trading होती है assets की. हर 2, 4, 5, 10 दिन में एसेट कभी बिकते हैं, कभी खरीद लिए जाते हैं. तो ये एसेट जो होते हैं ये ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे आते हैं, तो चॉइस ही नहीं है कोई. एंड देन देयर आर एसेट्स व्हिच आई कुड चूज टू ब्रिंग टू फेयर वैल्यू, एंड मोस्ट बिजनेसेस डू. Most major businesses do want to bring assets on fair value to their balance sheet for the simple reason that for example मैंने लैंड खरीदा था 100 साल पहले. Somebody from my family bought land for 20,000. Today that land is worth 20 crores. It's just an example. I don't actually own it, but I'm just saying. It's an example. Say 20 crores का land हो गया. And on my balance sheet, that land would be still for 20,000. क्योंकि historical cost चलती आ रही है. So I may want to bring my assets up to date to fair value. So I may have the option to bring it to fair value using the FV option election. So US GAAP will allow you to elect fair value as an option. चुन लो और अपने assets को ले आओ fair value पे, and a lot of businesses do. So that is why we need to know what the fair value of an asset is, and we need to be able to calculate it. Which brings me to my third and the final question: how do I calculate my fair value? So we've got 5 steps here on the board, and like I promised, I'm going to take you through each one of these steps individually, and I'll tell you how it works. सबसे पहले तो कहता है जी प्रिंसिपल मार्केट क्या है ये आइडेंटिफाई करो, आपका वैल्यूएशन प्रेमिस क्या है ये बताओ, आपकी अप्रोच क्या है और आपकी इनपुट्स क्या हैं, और उसके बाद आपकी वैल्यूएशन बन जाएगी. चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1. सो प्रिंसिपल मार्केट क्या होती है? सो प्रिंसिपल मार्केट इज द मार्केट विद द हाईएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस और द ग्रेटेस्ट मूवमेंट ऑफ द गुड. सो दैट इज माई प्रिंसिपल मार्केट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज टू टॉक अबाउट द शेयर ऑफ रिलायंस, इंडिया में जो शेयर बिकता है रिलायंस का, तो उसका प्राइमरी मार्केट कौन सा है? तो आप छूटते ही मुझे कहोगे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. हमारे यहाँ BSE पे बिकती है चीज़ें ये, एंड यूर राइट. सो वो इसलिए बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट हाईली एंगेज्ड मार्केट, मोस्ट एक्टिव मार्केट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द प्रिंसिपल मार्केट. प्रिंसिपल मार्केट क्या है?
कभी कभी क्या होता है, यू डोंट नो द प्रिंसिपल मार्केट फॉर एन एसेट, और योर प्रिंसिपल मार्केट कुड बी टाइंग विद अनदर just as engaging market. So let me take an example here from the book. So the book says, and I'm going to use a black marker for this. The book says you've got investments in stocks, and that stock that you have is worth $100 on NYSE. So on NYSE you've got stock worth $100, and on Nasdaq this stock is worth $98. तो हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट वॉल्यूम NYSE की अगर है तो I could very easily say that NYSE is my primary market. So I could say NYSE is my primary market. But let's say I don't know that NYSE is my primary market, or that the level of activity in both the markets is very similar. So then I would have to identify the most advantageous market. मेरे लिए most advantageous कौन सा market है? Most advantageous market ऐसे नहीं निकल जाएगा by going 198, क्योंकि cost to sell भी होती है, तो उसके adjustment करेंगे. So let's say on NYSE, when I do want to sell this, I have to pay a brokerage of $3.5. And on Nasdaq I have to pay a brokerage of $1. So in this situation the price that I would receive is 96.5 or 97, given that Nasdaq is paying the higher price, the better price of 97. Nasdaq is the most advantageous market. So while NYSE was my primary market, my most advantageous market would be Nasdaq, because I got a 97 net value in my pockets. If you're initiated in the concepts of CPA, then you would have heard this term before. It's called NRV, net realizable value. NRV, net realizable value. NRV का ये scene है, it is calculated as fair value minus cost to sell. So that it is NRV, fair value 100, 98 minus cost to sell gives me 96, 97. फिर उसके बेसिस पे हमने NRV के बेसिस पे हमने डिटरमिन किया कि Nasdaq is the most advantageous market. So that's step 1 that just got completed. Step 1 complete हो गया. We figured out our principal market. And in the absence of a principal primary market for us, we then ended up deciding which is the most advantageous market to us. Either ways, step 1 now just got completed. Second step is the valuation premise. Premise क्या है आपकी सामान को बेचने का? What is the thought behind it? So premise दो टाइप के हैं जो यहाँ अप्लाई होते हैं, in use and in exchange. So my asset could be in use or in exchange. Let's talk about that. So in use or in exchange. What do we mean by the fact that it's in use? What do we mean by the fact that it's in exchange? Let's take a simple example. Let's say मेरे पास एक मशीन है और उस मशीन के अंदर गोल्ड प्लेटेड सिलेंडर लगता है to make it work. So I've got a cylinder CY which is in gold and is worth $100. And then I've got my machinery जो मैं मार्केट में अगर खरीदने या बेचने जाता हूं तो मुझे $900 की पड़ती है, तो मेरा टोटल इज $1000. Now my premise is determined on the following. Let's say if I was to sell the machine with the gold cylinder inserted in it,
मुझे $1100 मिल जाएंगे। तो 1000 रुपये का टोटल कॉस्ट बन रहा था। इंडिविजुअली बेचने जाऊँ अगर मैं तो 900 का और 100 का ये बिकता है, पर अगर इन्हें इकट्ठे बेच दूँ मैं कंबाइंड तो मुझे 1100 मिलते हैं। इकट्ठे मतलब इन यूज। सो दिस इज द इन यूज प्राइस। नाउ इन दिस सिचुएशन इज फेयरली ऑब्वियस, मैं अकेले अकेले क्यों बेचूं? अकेले अकेले बेचूंगा तो 100 का ही बिकेगा, 900 का ही बिकेगा, मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। मैं इकट्ठे बेचूंगा इन यूज तो मुझे बेटर बेनिफिट है। इन यूज इट्स कंबाइंड विद अदर एसेट्स, इट इज सोल्ड इन यूज। व्हाट इफ आई वाज टू गेट 950 फॉर द होल थिंग कंबाइंड? अलग अलग बेचूंगा तो 1000 मिलेंगे, पर अगर इकट्ठे बेचा तो 950 मिलेगा। तो अगर इन एक्सचेंज प्राइस जो है वो ज्यादा आता है, विच इज दिस, तो मैं फिर ये करूंगा, मैं 950 में क्यों बेचूंगा? कंबाइन करके क्यों बेचूंगा? सो द क्वेश्चन इज इन यूज यानी कि कंबाइंड, और इन एक्सचेंज यानी कि सेपरेट। इन एक्सचेंज फॉर मनी आई सोल्ड माई एसेट, और आई सोल्ड माई एसेट विद अदर एसेट्स इन यूज फॉर मनी। सो इन यूज यानी कि कंबाइंड, इन एक्सचेंज यानी कि इंडिविजुअली। और वो कंबाइंड प्राइस क्या आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। इन यूज प्राइस अगर 950 हो जाता है तो मैं सेपरेटली इन एक्सचेंज बेचूंगा, और इन यूज प्राइस अगर 1100 हो जाता है, इन एक्सचेंज प्राइस 1000 ही है, तो फिर मैं इन यूज बेचूंगा। मैं हमेशा कोशिश ये करूंगा कि मेरे को 1 रुपया फालतू ही मिले, कम ना मिले। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इन यूज और इन एक्सचेंज, शुड आई सेल माई सिलेंडर सेपरेटली और कंबाइंड? That completes step 2 for us. So first things first, we identified what our market is, then we identified हमने इसको कैसे बेचना है, अकेले बेचना है या इकट्ठे बेचना है, या एसेट इंडिविजुअली बेचना है या किसी चीज के साथ बेचना है। Then comes in step 3, which is what is my approach. So step 3 की बात कर लेते हैं। So step 3, so let me put all of this down here. We'll say this is step 1, this was step 2. Now we shall talk about step 3, where again you've got 3 different approaches. So 3 अलग अलग approaches है मेरे पास. Let me quickly note those down and then we'll put it down here. We've got 1, 2, 3 different approaches, and I could use them either in combination or separately, and I'll tell you how it works. Number 1 is called market approach. Number 2 is called income approach, and number 3 is called cost approach. Market, income, cost. That is my logic. मार्केट है, इनकम है, कॉस्ट है, 3 अप्रोचेज है। कौन सी आपने चूज करनी है, कैसे चूज करनी है, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, I'll tell you about it. Firstly, what is the market approach? When you try and get the fair value through market analysis, through market comparisons, this is called the market approach, where you're going to the market to identify your fair value, and this is by and large the most reliable approach. So market approach is the most reliable and the preferred approach. But कभी कभी market approach possible नहीं होती, because your assets could be of 2 types, could be financial or non-financial. A financial asset is where there is a contractual cash flow. या तो कैश आता जाएगा या कैश देना है after a while, contractually each year or whatever. This is a contractual cash flow, and this is what we call a financial asset. So financial asset के अच्छे example क्या हो गए? Bonds हो गए, stocks हो गए. Then there is non-financial assets, जहाँ पे contractual cash flows exist नहीं करते हैं, but they are an asset nevertheless. For example, I have plant, property, machinery. All of this PP&E is, well, a non-financial asset, but it is an asset nevertheless, and I would want to find out its fair value. So in those cases I may use the income or the cost approach. So income approach वैसे तो primarily रखती है to financial assets, because that is where it is most reliably applied. But sometimes when the market value is not known, you may end up frequently using the income approach on non-financial assets as well. So income approach क्या कहती है? Income approach ये कहती है, मेरे को अगर ये पता है कि future incomes क्या आने वाली हैं,
let me discount them to the present value today, and that is the value of the asset. So another word for this could be NPV, net present value. फ्यूचर में जो भी इनकम आएगी उसकी आज जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इनकम अप्रोच के अनुसार फेयर वैल्यू बन जाती है. फेयर इनफ. एंड देन द लास्ट थिंग इज माय कॉस्ट, which is also known as replacement cost. So let me put that down there. Replacement cost, RC. तो मेरे को अगर आज अपना एसेट बदलना हो, जैसे मैंने कहा ये मशीनरी है, ये सिलेंडर है, इनको अगर बदलना हो तो कितने में खरीदना पड़ेगा मुझे सब सामान? I want the identical asset and I want it in the identical condition. How much would it cost me to replace it today? That is my replacement cost approach. So market approach is also called FMV, fair market value. इनकम अप्रोच में नेट प्रेजेंट वैल्यू से हमारा लेना देना है, और एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या उसके तरीके, क्या स्टेप्स हैं, इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है. सो दिस विल बी कवर्ड इन ग्रेट डिटेल in the upcoming sections, in the upcoming classes. And then there is cost, replacement cost, which is essentially a simple method of saying how much would it cost me to replace this asset today. How much would I be needing to indemnify myself? So there is a term from the insurance market, indemnity, indemnify. तो अगर खुद को indemnify करना हो, exactly no profit no loss situation पे लाना हो of the same asset, तो कितने की cost पड़ेगी? 3 approaches. अब ये 3 अप्रोचेस कॉम्बिनेशन में भी लगती हैं, इंडिविजुअली भी लगती हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एसेट यू वुड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. अगर मैं कोई स्टॉक की बात कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश मार्केट अप्रोच ही रहेगी हमेशा ही. बट इफ इट्स स्टॉक इन अ कंपनी दैट इजंट पब्लिकली ट्रेडेड, उसकी मार्केट कोड नहीं मिल पा रही, तो आई माइट वांट टू कैलकुलेट द इनकम फॉर इट. इनकम भी मैं रिलायबली नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा, तो उस केस में आई माइट वांट टू गो विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर दिस स्टॉक. कि ये स्टॉक अगर आज रिप्लेस करना पड़ जाए टू हैव द एग्जैक्ट सेम अमाउंट, तो कंपनी मुझसे क्या चार्ज करेगी. सो आई कुड यूज इट डिपेंडिंग ऑन माई सिचुएशन, विच इज वाई व्हेन आई से दैट आइडेंटिफाइंग द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट इज मोर आर्ट देन इट इज साइंस. यू बेस्ट बिलीव इट, बिकॉज आइडेंटिफाइंग द फेयर वैल्यू रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट. It requires you to identify the type of asset that you're using and suitable approach for its measurement. So it is undoubtedly more art than it is science. But from our standpoint as accountants, we always try and make everything as straightforward as possible. So we will then talk about step 4, where we will talk about the inputs. मैं बात करता हूँ इस बारे में. अप्रोच फाइनल हो जाए जब आपकी, तो इनपुट्स रह जाती हैं. एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एसेट मैं अप्रोच चेंज कर सकता हूँ. आई कुड हैव मार्केट वैल्यू फॉर एन एसेट, और आई कुड हैव इनकम फॉर एन एसेट, और आई कुड हैव द कॉस्ट अप्रोच फॉर एन एसेट, और आई कुड यूज ऑल 3 of them and average out the value, और यूज द 2 best approaches that suit my purpose, average those. डिपेंड करता है, और इंडस्ट्री गाइडेंस रहती है इसके ऊपर. फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंपनी में EY, KPMG, Deloitte कहीं भी जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में जनरल प्रैक्टिस क्या है टू मेजर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एसेट्स. बट जनरल प्रैक्टिस रहती है, लाइक आई सेड, फिक्स्ड स्पेसिफिक रूल वो रेयर सिचुएशन होती है. नाउ डोंट वरी अबाउट दिस फॉर द CPA एग्जाम स्टैंड पॉइंट, बिकॉज यू विल नॉट बी टेस्टेड ऑन द आइडिया ऑफ फिगरिंग आउट विच इज द बेस्ट अप्रोच. You will be tested on approaches, but होता ही है उस केस में they'll tell you that there is a company that went to the market to identify the value of their bonds. What approach have they used? और आप फिर कहोगे जी market approach use किया उन्होंने. Then you could have a question where you would say the company to identify the value of its bonds calculated all of the future cash outflows that it would have to pay to its bondholders to figure out the value of the fair value of the bond. फिर आप कहोगे जी ये income approach use करी है इसने. सो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बट वुड नॉट बी अबाउट यू हैव अ कार एंड नाउ दे वांट यू टू वैल्यू इट एंड दे आस्क यू कौन सा मेथड यूज करोगे, बिकॉज वहाँ पे फिर वो दिक्कत हो जाती है, वहाँ प्रोफेशनल जजमेंट लगती है, और उस एंगल से हम टेस्टिंग नहीं करते. दिस इज वेयर यू वुड एंड अप यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम योर फर्म. बट कमिंग बैक टू स्टेप 4, सो लेट मी पुट दैट डाउन ऑन द बोर्ड हियर. Step 4 is inputs. What are my inputs?
सो इनपुट में भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. Level 1 input is an input where you get a quoted price from an active market for an identical asset. अभी बात मैंने क्या कह दी आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट तो. Let me just note this down. So I say quote identical asset and active market. Let's say I wanted you to find out the stock or the fair value of my shareholding in Reliance Industries. तो आप मुझसे कहोगे जी आपके पास कितने शेयर है, मैं कहूँगा जी मेरे पास एक ही शेयर है बस. ये एंटिटी का नाम है और उस एंटिटी के अंदर ये मेरा शेयर है एक, मुझे इसकी कीमत बताइए क्या है. So what you would do is you would then open up your laptop, go on Google, type in the name of the stock and find out what is the active current market in BSE and you'll tell it to me. यूट से सर BSE में आज आपका शेयर जो है वो इतने का बिक रहा है, ये इसकी फेयर वैल्यू है. आपने क्या किया इस पूरे सिचुएशन में? यू यूज्ड योर कॉमन सेंस बट यू आल्सो वेंट थ्रू दीज स्टेप्स विदाउट नोइंग इट. यू आइडेंटिफाइड दैट द प्रिंसिपल मार्केट फॉर मी इज BSE. यू आइडेंटिफाइड दैट द वैल्यूएशन प्रेमिस फॉर माय स्टॉक इज इन एक्सचेंज, इट्स नॉट इन यूज. मुझे ये इकट्ठे नहीं बेचने हैं, एक स्टॉक अकेले बेच के मेरा काम बन जाएगा. सो यू सेड वैल्यूएशन प्रेमिस इज इन एक्सचेंज. देन यू सेड अप्रोच कौन सी लगेगी? मार्केट अप्रोच लगेगी, क्योंकि आपने सीधा BSE के वेबसाइट को खोलकर वहां से प्राइस निकाला है. तो आपने मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो ढूंढने हैं. और आपने क्या ढूंढा इसमें, कौन सी इनपुट लिया आपने? यू सेड क्वोट फॉर एन आइडेंटिकल एसेट, आइडेंटिकल शेयर का, एग्जैक्टली सेम शेयर का एक्टिव मार्केट में क्या दाम है. दिस इज अ लेवल 1 इनपुट. लेवल 1 इनपुट इज द बेस्ट लेवल ऑफ इनपुट. अगर आपको लेवल 1 इनपुट मिल जाती है तो वो परफेक्ट चीज़ है. तो बात वही हो जाती है कि अगर मेरे को क्वोटेड, आइडेंटिकल, एक्टिव ये 3 चीज़ें मिल रही हैं तो मैं बेसिकली मार्केट अप्रोच कर रहा हूँ. मार्केट अप्रोच प्रेफर्ड है, FMV निकल आएगी मेरी, कहानी खत्म. बट लेट्स से यू गॉट एन एसेट दैट कैन नॉट बी सो इजीली आइडेंटिफाइड, इंटेंजिबल है. या फिर यू गॉट एन एसेट विच इज tangible but it is so unique, it needs to be appraised. There is no way to find out इसकी exact value क्या है. For example, I've got a Monet, it's a painting, or I've got a old Pagoda Mercedes SL 500 with white leather interiors and a hardtop convertible, and there are only 3 of these kinds of cars left in the whole world. Now that's a special asset, right? ये बड़ी स्पेशल तरीके की गाड़ी है, विंटेज कार है और सबके पास नहीं है. Now what do you do? Now how do I find out what the value is? So इसके लिए आता है लेवल 2 इनपुट. लेवल 2 इनपुट कहता है आपको कोट मिल जाए ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर एसेट फ्रॉम अ एक्टिव की जगह लिमिटेड एक्टिविटी. लिमिटेड एक्टिविटी मार्केट भी चलेगा, जरूरी नहीं एक्टिव हो, लिमिटेड एक्टिविटी भी चलेगा. सो सिमिलर हो, लिमिटेड एक्टिविटी हो. सो व्हेन आई सेड मेरी ये मर्सिडीज है स्पेशल SL 500, इसका क्या करें? तो यू सेड एक सेकंड रुको सर, ये किस साल में बनी थी? इस साल में ये गाड़ियां भी बनी हैं और इसी लेवल का फेम, इसी लेवल की रेयरिटी ये एक फरारी GTO 250 है, उसका है. फरारी GTO 250 यूरोप में बिकी थी, यूरोप में वो इतने की बिकी थी, वो जितने की बिकी है योर प्राइस विल बी समवॉट सिमिलर टू इट. व्हाट हैव यू डन नाउ? You used your common sense, but you've also gone through the checklist. You've identified कि गाड़ी यूरोप में बिकी थी, तो वो मेरा प्राइमरी मार्केट है या वो मेरे लिए मोस्ट एडवांटेजस मार्केट है. Then you identified इसका वैल्यूएशन प्रेमिस क्या है, इन यूज या इन एक्सचेंज. भाई ये गाड़ी एज इट इज इन एक्सचेंज निकल जाएगी, कंबाइन करके बेचने की जरूरत नहीं है विद अदर कार्स. You don't have to sell your car collection, you should sell your individual car. Then you said what is the approach? So the approach again was market approach. You went to the market to identify what the price is. So you said market approach. And then input. You said I don't have a level 1 input but I have a level 2 input. I'll use it.
So in the absence of a level 1 input, we would use a level 2 input. Level 1 is most preferred, level 2 is preferred less, level 3 is least preferred. But again, अगर level 1 और 2 की absence है तो level 3 ही बचता है, choice नहीं है. So fair value calculation जो है वो थोड़ी कमज़ोर होती जाती है. जितना estimation बढ़ेगा, professional judgment बढ़ेगा, वो like I was saying उतना ही art बन जाएगा या science से कम रहेगा. And the more artsy it becomes, the less reliable it is for us as accountants, because we will always prefer an approach that works in the most scientific manner for us. Exact number आ जाए जहाँ. So you said level 2 input, quote similar limited activity. चलेगा. और भी कुछ level 2 inputs होती हैं which are observable inputs. फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इस समय करंट इंटरेस्ट रेट्स क्या यूज हो रहे हैं. सो फॉरगेट अबाउट द मार्केट अप्रोच. लेट्स से आई हैव द इनकम अप्रोच. मैं इनकम अप्रोच यूज कर रहा हूं टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ माई बॉन्ड्स. मैं ये ढूंढना चाह रहा हूं कि ये बॉन्ड्स जो हैं इनकी कीमत क्या है ऑन द बेसिस ऑफ द कैश आउटफ्लो दैट आई विल हैव टू पे टू माई बॉन्ड होल्डर. सो उसके लिए मैंने आज का मार्केट का इंटरेस्ट रेट लिया है. नाउ इंटरेस्ट रेट इज अ लेवल 2 इनपुट. लेवल 1 में एक ही चीज आती है सर, क्वोटेड आइडेंटिकल एक्टिव. दैट्स इट. क्वोटेड प्राइस फॉर एन आइडेंटिकल एसेट इन एन एक्टिव मार्केट. वो नहीं है तो लेवल 2 हो जाएगा अपने आप. तो लेवल 2 में फिर ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आ जाती हैं. सो लेवल 2 इज क्वोटेड प्राइस फॉर सिमिलर और आइडेंटिकल एसेट्स फ्रॉम अ लिमिटेड यूज मार्केट और ऑब्जर्वेबल इनपुट्स. ऑब्जर्वेबल इनपुट्स में आपने कहा जैसे आज का क्रेडिट स्वैप रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, मार्केट में डिफॉल्ट रेट क्या है. ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी इन माय इनकम कैलकुलेशंस. इनकम अप्रोच की कैलकुलेशन में जो मैंने ऑब्जर्वेबल इनपुट्स यूज़ करी वो लेवल 2 हो जाता है. देन देयर इज लेवल 3. सो लेवल 3 आइटम्स वो आइटम्स हैं विच आर अनऑब्जर्वेबल. My bad. So you've got unobservable inputs which are level 3. Unobservable inputs कौन सी होगी जो आपने खुद कैलकुलेट करी हैं. These are forecasts, financial models that you've used. These are your own calculations. They are an estimate. They may be an educated estimate, but they are unobservable. So thus they are level 3. They are the least preferred. So my idea is always to have a higher level of input and the appropriate approach. ये दो चीज़ें ठीक हो गई अगर और मैंने प्रिंसिपल मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया, प्रेमाइस मेरा सही रहा, तो all of this will work, fall in place and I will have my assets fair value. Which is why step 5 after you've completed step 4 is simply determine the fair value. That's it. इसमें कुछ करना नहीं है. The calculation is the only thing left here. तो calculation ही करनी है हमने बस. So let's run ourselves through an example. 5 steps फॉलो कर रहे हैं. हमने कहा वो स्टॉक का एग्जाम्पल, आपने कहा मार्केट BSE, हमने कहा प्रमाइस क्या होना चाहिए, आपने कहा अकेले बेच दो. अप्रोच क्या होनी चाहिए, मार्केट अप्रोच होनी चाहिए. इनपुट क्या होना चाहिए, लेवल 1 इनपुट होना चाहिए, मार्केट से जो रेट मिल रहा है. तो स्टेप 5 जो है टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, इसमें करना क्या है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, फेयरली सिंपल, जो कोट आया वो आ गया. Then comes in second situation where you've got a principal market for Europe because your asset is a rare Mercedes or a vintage car. And then step 2 becomes valuation premise. So premise क्या होना चाहिए जी, ये गाड़ी आपने अपनी बाकी कार कलेक्शन के साथ बेचनी है या अकेले बेचनी है. हमने कहा जी अकेले बिक जाए उसमें ज़्यादा फायदा है. हमने कैलकुलेशन करी जैसे हमने यहाँ पे करी थी कैलकुलेशन. वी फिगर्ड आउट द बेस्ट वे टू सेल दिस इज इंडिविजुअली सेपरेटली. सो वी सेड वैल्यूएशन premise is in exchange, not in use. Then we said what is the approach for my car. I can't have an income approach, doesn't make sense, right? For my royalties, for my intangible assets, income approach would be a very good idea. Let's say I wrote a song and वो रेडियो पे बिकता है, रेडियो पे चलता है, जितनी बार रेडियो पे चलेगा मुझे रॉयल्टी इनकम आएगी. तो उस सॉन्ग की, उस इंटेंजिबल की वैल्यू निकालने के लिए इनकम अप्रोच बहुत बढ़िया चीज़ है. बट मेरी गाड़ी के लिए जो मैंने बेचनी है उसमें से इनकम अप्रोच डजंट मेक सेंस. मे बी यूजिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट वुड बी अ फाइन चॉइस. सो आई पुट दीज टू टुगेदर एंड आई सेड लेट्स यूज अ कॉम्बिनेशन. आपने कहा मार्केट में मैंने लेवल 2 इनपुट ली है
लेवल 2 इनपुट के साथ मेरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है. सो लेट्स ऑल्सो लुक एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मैंने कहा अगर ये गाड़ी आज रिप्लेस करनी पड़े तो कितनी है. आपने कहा जी वो तो बहुत महंगी है, क्योंकि ईच पार्ट वुड हैव टू बी सेपरेटली ऑर्डर्ड एंड सिर्फ पार्ट्स ही मिलेंगे, पूरी गाड़ी नहीं मिलेगी बिकॉज द प्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड. सो इन दैट केस यू फिगर्ड आउट कि एक ये और एक ये कंबाइन करके इनकी क्या वैल्यू लेनी है. एंड योर इनपुट्स वर बेस्ड ऑन द हायरार्की हियर. सो यू ट्राई टू यूज एज मेनी लेवल 1 इनपुट्स. सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में लेवल 1 इनपुट मिल गया, क्योंकि मेरे को आज अगर अपनी गाड़ी जो पुरानी ही क्यों ना हो उसका पार्ट बनाना पड़ जाए या मंगवाना पड़ जाए मर्सिडीज की जर्मन फैक्ट्री से, तो मुझे क्या खर्चा पड़ेगा वो मेरे को एग्जैक्ट मिल गया. सो आई ट्राई टू यूज द बेटर क्वालिटी ऑफ कोट एंड देन फाइनली आई हैड माई fair value because I simply added or averaged the two approaches and I determined my fair value. So step 5 got done there, and that is how you will calculate fair value in real life, in your actual day-to-day tasks as an professional accountant or as a business owner at times from different perspectives. Now with that being said, I hope you did enjoy this video. I hope you understood how fair value is calculated specifically from a US GAAP standpoint, and I hope you have a good day. Thank you for watching.